सर 5 चरणों का मतदान हो चुका है। इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या नजर आ रही है और कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का क्या आकलन? देखिए 428 सीटों में चुनाव हो चुका है, अभी 2 चरण बाकी हैं। पर पहले 2 चरण के बाद ही, पहला चरण जो 19 तारीख अप्रैल को हुआ और दूसरा फेज जो 27 तारीख हुआ अप्रैल को, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि एक निर्णायक जनादेश मिलने वाला है इंडिया जनबंधन को। और बीजेपी दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में साफ। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं किस आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूं? क्योंकि एक तो जो फीडबैक आ रहा था हमें हमारे कार्यकर्ताओं से, जो मनोबल था हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का, जो अलग अलग संस्थाएं, नागरिक संस्थाएं, जो राजनीति से कुछ उनका लेना देना नहीं है, उनसे हमने बात की, उनसे जो हमने जानकारी हासिल की। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 19 तारीख अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई, बदलाव आया, परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री विकसित भारत, विकास, कुछ बात नहीं की उन्होंने बात करने लगे हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, धर्म के आधार पर आरक्षण, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। और 19 तारीख अप्रैल से लगातार वो एक सांप्रदायिक पिच तैयार कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी उस पिच पर आकर क्रिकेट खेले। पर हमारा पिच हम नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा पिच क्या है? 5 न्याय 25 गारंटी। किसान, युवा, श्रमिक, नारी, महिला और हिस्सेदारी, यही तो हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी का कार्यक्रम है। उसी के आधार पर हम एक सकारात्मक रणनीति अपनाकर हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो रोज नए नए मुद्दे उठा रहे हैं। सारा का सारा गेम प्लान उनका है ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन दें और इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम का चुनाव बना दें। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं। 400 पार पहले तो करते थे। मोदी की गारंटी अपनी 56 इंच की छाती ठकठकाते थे, पर क्या हुआ? वो भूल गए। तो ये 4 तारीख, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 4 तारीख को इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो चुका है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने बोला है पीटीआई से इंटरव्यू में कि वो 400 सीटें लाने के लिए एनडीए ऑन कोर्स है और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जनादेश होगा इस बार। तो आप इस दावे नहीं, ऐसा कैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है? राजीव गांधी का जनादेश 1984 में 410 था। तो पर इनका 400 पार का असली माने क्या है ये देखते हैं आप। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये 1949 26 जनवरी को अपनाया गया था संविधान सभा में। और तभी ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का प्रकाशन है, उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी, इसका कड़ा विरोध किया, अम्बेडकर साहब की इतनी आलोचना की, क्योंकि उनका कहना था, लिखना था कि इसमें भारतीयता कुछ नहीं है, मनुवादी मूल्य यहां शामिल नहीं है, मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं मिला। तो हमेशा इस संविधान के खिलाफ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, एक समिति उन्होंने बिठाई। पहला मकसद था उस समिति का, जो पहली बार सोच हुई थी उस समिति की, ये था कि इस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदले। पर जब उस समिति के अध्यक्ष जस्टिस वेंकटाचलैया ने अपनी आपत्ति जताई, तब उसका शीर्षक बना कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूल ढांचा इसमें नहीं बदला जाए। तो असली मकसद यह है इस संविधान को बदले, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को बदले, ताकि इसका मूल सिद्धांत जो है सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण, आरक्षण के आधार पर, आरक्षण को हटाना इनका मकसद है। एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण। प्रधानमंत्री से मेरे 2 सवाल हैं। आप बार बार आरक्षण की बात उठा रहे हैं, कांग्रेस पर आप कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की महामारी फैला रहे हैं। आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आप कराएंगे? और दूसरी बात, 50% सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 1992 में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के लिए, क्या उसको बढ़ाएंगे कि नहीं? इस संविधान के नवी सूची में सिर्फ तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जिसका आरक्षण कानून नवी सूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में 69% है, वो गैर कानूनी नहीं है।
वो गैर संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान ने उसको सुरक्षित रखा है। क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे, स्पष्ट करेंगे? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तो है ही है, आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, सभी राज्यों के आरक्षण के कानून जब 50% की सीमा छू जाता है, क्या उसको नवी सूची में शामिल करेंगे? हमने गारंटी दिया है कि हम 50% की सीमा बढ़ाएंगे, और उसको लेकर वो धर्म के आरक्षण की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, 5 चरणों का मतदान हो गया है, सीटों के हवाले से आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें इंडिया में? नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, और मैं स्वघोषित पोल एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं सीटों का आंकड़ों दूं। मैं ये कह रहा हूं कि 4 तारीख को जब गिनती होगी, सही माने से गिनती होगी, चुनाव का नतीजा घोषित किया जाएगा, जनता जान जाएगी कि इंडिया जनबंधन को, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया जनबंधन को एक स्पष्ट और जनादेश मिलेगा। ये किसान की मांग है, ये श्रमिकों की मांग है, पिछड़े वर्गों की मांग है, युवाओं की मांग है। जमीनी स्तर पर कोई लहर नहीं दिखाई देता, जमीनी स्तर पर नाराजगी है, और लोग चुपचाप तरीके से इंडिया जनबंधन को वोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कहेंगे हमने इंडिया जनबंधन को वोट किया, मिसाल के तौर से यूपी में आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर कूद पड़ेंगे। तो इसीलिए वो बोलते कुछ हैं, पर करते जो है ना, हमने देखा है, हमारा अनुभव रहा है कि वो इंडिया जनबंधन को ही जिताने में लगे हुए हैं। आपको लगता है ये एक साइलेंट इलेक्शन है? ये साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन भी साइलेंट है, इतना साइलेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आंख बंद कर दिया है, सुन नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है और देख नहीं रहा। इतनी शिकायतें हमने की हैं चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, और अभी तक जो हमने शिकायत की है प्रधानमंत्री के भाषणों के बारे में, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। 11 दिन लगे, पहले चरण के बाद 11 दिन लगे। वो आंकड़े जो वोटर टर्नआउट के आंकड़े थे, औपचारिक तौर से उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। और आज भी 2 दिन पहले हमने शिकायत की थी, बुलडोजर लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ बकवास की बातें की हैं, उनको लेकर हमने चुनाव आयोग को शिकायत किया, पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है। टीएन शेषन आंसू के गंगा बहा रहे होंगे, सुकुमार सेन जो 1952 में पहला जनरल इलेक्शन कराया था, उन्होंने, एक बड़े नाम है हमारे चुनावी इतिहास में, वो आंसू के गंगे बहा रहे होंगे। जेएम लिंगड़ो आंसू के गंगा बहा रहे होंगे। तो ये स्थिति इतना साइलेंट है कि इलेक्शन कमीशन भी साइलेंट हो गया। आपने कहा कि आप आंकड़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन कल आपने एक पोस्ट में बोला है कि ऑलरेडी 272 पार हो गया। नहीं, हमें तो, मैंने कहा ना, 2 चरण के बाद ही जो रुझान हमें देखने को मिला है, जो हम देख रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इन राज्यों में 2019 में हमारा सफाया हुआ था। मिसाल के तौर से राजस्थान में हम 0 में थे, महाराष्ट्र में 1, कर्नाटक में 1, तेलंगाना में 3, छत्तीसगढ़ में 1। तो इन राज्यों में इस बार मैं समझता हूं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का जो कंसोलिडेशन हुआ है, और वो जान गए हैं कि आरक्षण खतरे में है। किसान नाराज हैं, जो वादे किए गए थे किसानों को। मैं कल हरियाणा में था, हरियाणा के किसान नाराज हैं कि उन्होंने एमएसपी का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। कर्जा माफी की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ है, पर किसान का 1 रुपया भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो पंजाब में भी यही हाल है। तो मैं जमीन, अगर हर राज्य में देखें, जो जमीनी हकीकत है, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री से लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जनता पहचान गई है कि हमारे ये निवर्तमान प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते, ये असत्यमेव जयते में विश्वास रखते हैं। एक आखिरी सवाल, ये इंडिया ब्लॉक में बीजेपी का कहना है कि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, खास करके वेस्ट बंगाल में भी देखा गया था कि अधीर रंजन चौधरी ने अटैक किया। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है,
कोई कॉन्ट्रडिक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं संगठन में, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ममता जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया जनबंधन का एक हिस्सा हूं। उन्होंने हर इंडिया गठबंधन जनबंधन की बैठक में उन्होंने भाग ली, पटना से लेकर दिल्ली तक। और उन्होंने, हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया क्योंकि एक तरफा फॉर्मूला आ गया, उस पर बातचीत नहीं हो पाई। और हमारे कुछ नेता ये पहचान नहीं पाए कि ये इंडिया जनबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के लिए है। और ये 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव है, पश्चिम बंगाल में और सभी राज्यों में, विधानसभाओं का नहीं। तो जो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है वो सर्वोपरि है, उसका कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। Sir, in an interview to PTI, PM Modi said that he has never said a word against minorities, and he has only exposed Congress's appeasement politics, as BJP does not consider anyone a special citizen. What nonsense is he talking? This Prime Minister is fast losing his memory. He has never had any adherence to truth. I mean, he is jhoot jivi. But now what he says today, he forgets tomorrow and says he never said it. Of course, he's been attacking the Congress party. He's been talking of Hindu-Muslim. He's talked of the Muslim League. He's talking of Mangal Sutra. He's talked about the Congress party giving reservations on the basis of religion, which are all bogus statements that he has made. And this is the Prime Minister who was asked some years ago, did he have any regret or remorse, at the killings during the Gujarat riots? He said, yeah, जब गाड़ी के सामने एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है, वो कुचल जाता है, तो कुछ दर्द और दुख होता है. This is what the language that he has used. And his entire campaign from the 19th of April onwards has been based on communalization. He's been based on polarization. And Hindu-Muslim, 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 all through. No talk of Viksit Bharat, no talk of Modi guarantee, no talk of, what the issues of the farmers, of youth, of women, of workers, of the scheduled castes, scheduled tribes and OBCs. No, it's only Hindu-Muslim. It's a communal agenda. He's preparing a communal pitch, and he wants the Congress party to play on that pitch. We have refused to do it because our agenda is the Panch Nyay, Nari Nyay, Yuva Nyay, Kisan Nyay, Shramik Nyay, and Hindesitari Nyay, and the 25 guarantees that we have given. So on the Congress's charge that the BJP will change the constitution, he has said that his self-interest is in protecting the constitution and in welfare of the constitution. What's your take on this debate? On November 26th, 1949, this Constitution of India, the Constitution of India, it was adopted by the Constituent Assembly. And Dr. Ambedkar made a speech the day before, on the evening of November 25th, when he said, 1949, when he said, without the Congress party, this constitution would not have been made possible. This is Dr. Ambedkar saying. 4 days after this, a constitution was adopted. Organizer, which is an RSS publication, says that this constitution, there is nothing Indian about this constitution because Manuvadi, there are no Manuvadi values. Manu Smriti is not the inspiration for this. And subsequently, Golwalkar, Deen Dayal Upadhyay, Mohan Bhagwat, so many people have been, Vivek Debroy, so many spokesmen have been attacking this constitution, saying the time for this constitution is over. The constitution has been amended. We amend the constitution. It shows it is a flexible document. But to do away with the constitution, lock, stock and barrel. Let me tell you a story which very few people know. When Atal Bihari Vajpayee became the chief prime minister, they wanted the constitution review the constitution. Mr. Advani and company wanted that there should be a committee to review the basic structure of the constitution, to move away from a prime ministerial form to a presidential form. They appointed Justice Venkatachalaya, a very distinguished former Chief Justice. And Justice Venkatachalaya said, I am not going to be a party to doing away with this basic structure of this constitution. So they called that committee to review the working of the constitution. We, of course, Congress party and many other parties boycotted that commission. So this always been the objective of the BJP and the RSS. They are deeply uncomfortable and hostile to this idea of this Ambedkar constitution, because one of the pillars of this constitution is social justice, and the road to social justice is through reservations. And
Why is the Prime Minister silent on the issue of caste census? His own colleague in Bihar, Nitish Kumar, has conducted a caste census. Why is the BJP not said anything on the caste census? Because caste is a living reality in our society. We carried out a socio-economic caste census. Because without a caste census, you will never be able to ensure the full right of reservation for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs. Why is the Prime Minister silent on the 50% limit on reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs set by the Supreme Court in 1992? Only Tamil Nadu in Schedule 9 of the Constitution, if you look at Schedule 9 of the Constitution, entry 257A, only Tamil Nadu's reservation law for scheduled castes, scheduled tribes and OBC is included in Schedule 9. So 69% is not considered a violation because it is protected under the 9th schedule of the Indian Constitution. We've been saying that we will bring all other laws in the 9th schedule. We will increase the 50% limit for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs. Not religion, but scheduled caste, scheduled tribe and OBCs. For which you have to do a socio-economic caste census. Why has the Prime Minister not said a word on this? Not a word on caste census, not a word on 50% limit, but he's going around spreading an epidemic of lies that the Congress party is giving reservations based on religion. Where have we given reservations based on religion? The 94 reservations in Karnataka, which he keeps referring to, reservations were given for minorities, Muslims, Christians, Jains, Buddhists, based on socio-economic criteria, on socio-economic backwardness. And that's how they were introduced in the reservation law. And subsequently in an interview to a television channel, Prime Minister says, I myself gave reservation. मैंने खुद आरक्षण दिया है मुसलमान की जातियों को केंद्रीय सूची OBC की सूची में मैंने शामिल किया है. Now, if Prime Minister does it, it is not religion-based reservation. But if the Congress does it, based on socio-economic criteria, it becomes religious-based reservation. This man, he's even by mistake, he cannot tell the truth. He is just full of lies, spreading this epidemic of lies. And, this country deserves better. Sir, in the same interview, he also referred to his Adani-Ambani comment and said that has been validated by Mr. Adhir Ranjan Chaudhary's remarks that if they would have got money, they would be silent. Absolutely not. First of all, Mr. Adhir Ranjan Chaudhary does not speak on behalf of the Indian National Congress. I don't know what context in which he made that comment. He has said, Mr. Chaudhary has later said that he had meant it as a joke. Yeah, so what did the Prime Minister say? Prime Minister said, Adani or Ambani, Kala Dhan, Bori, not काला धन की बोरी टेम्पो में लेकर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी. November 8th, 2016 नोटबंदी उन्होंने की. और नोटबंदी, what is the objective of demonetization? To remove black money, unearth black money. 8 years later, you yourself, Prime Minister, is saying Adani and Ambani, his two closest buddies in the corporate world, are taking. How did they accumulate this black money? Where is this tempo registered? Why are you not taking ED and CBI action against these black money distributors? You've put Hemant Soren in jail. You've put Arvind Kejriwal in jail. But why are Adani and Ambani out? When you yourself publicly are saying that they are taking a tempo full of black money in gunny bags and giving it to the Congress party. This is what he said. See, there's a pattern on the last 1 week, last 8 days. Prime Minister gives an interview. Then next day he says, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो वो नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब तो ये था. So something is happening to him. He's not well. He needs treatment. Sir, just one more question on the remarks. He has also said that the Congress failed to play the role of an opposition in the last 10 years, and the voter turnout is low because even the Congress workers are not going to vote for, are not going to the booth to vote for the party. The greatest. What was the Bharat Jodo Yatra? 4,000 kilometers, Kanyakumari to Kashmir, which Mr. Rahul Gandhi walked. What about the 6,600 kilometer Bharat Jodo Nyaya Yatra from Manipur, which the Prime Minister has not had the courage to visit, and which Mr. Rahul Gandhi has visited twice, to Maharashtra? Was this not an attempt at going to the public? And before that, in Parliament, all the amendments that he brought, the laws that he brought, we were successful in resisting the amendments to the Land Acquisition Act of 2013. He tried to force through amendments, if you will recall.
which provided for higher compensation to farmers, which ensured that forcible acquisition will not take place, that acquisition will take place only for the purposes for which it is acquired, and if the land is not used for 5 years, it will be returned back to the farmer. All these amendments he was bringing. It was the Congress party that stood up and said no, and he was forced to withdraw those amendments, and then he came up with a too clever by half solution, which said, okay, I'm not going to amend, I'm going to allow the states to amend. So BJP ruled states ended up amending the Central Act. So there are many such instances. The Congress has opposed him. The Congress has always opposed the anti-farmer, anti-environment, anti-labor laws. How did, after all, the primary cause for his withdrawing the 3 black farm laws was the opposition of farmer organizations, which is also the Congress party and other opposition parties, which stood up in solidarity with the farmer organizations. And on the 19th of November 2021, after almost a year of stonewalling, the Prime Minister was forced to withdraw these 3 black laws. And when he was withdrawing, he made a guarantee of MSP to farmers. He has not fulfilled that guarantee of MSP. The farmers demanded that loan waiver should be there. You have written off 16 lakh crores worth of loans of your favorite industrialists. Why not have a systematic loan waiver program for farmers like we had in 2008 when 72,000 crores of farm loans were waived? He is silent on that. So just last 2 questions. Sir, many political analysts have said that UP is the gateway to Delhi. So last time in UP, the BJP performed exceedingly well. The Congress did very badly. How do you see the There's been a dramatic turnaround. There's been a dramatic turnaround in UP, and the India Alliance, the India Group, the India Janbandhan will, in my view, of course, the road to Delhi is through Lucknow because 80 seats come from Uttar Pradesh, and I have absolutely no doubt in my mind the response that the public gave to the Bharat Jodo Nyaya Yatra, Varanasi, in Prayagraj, in Pratapgarh, in Lucknow, in Amethi, in Raebareli, Aligarh, Moradabad, Amroha, Sambhal, the entire length that we went in Uttar Pradesh, people were coming out. Youth was coming out, women were coming out, people, the OBCs, the scheduled castes, scheduled tribes were coming out. So I think there's been complete disenchantment and disillusionment with the Prime Minister. People are just fed up with him. He's tired, he's jaded, and he's faded. So that's it. So in UP, do you think in the 5 phases that have gone by? Absolutely. I mean, our strong performance on June 4th when the results come out, of course, one of the primary contributing factors would be a hugely impressive turnaround in UP. Sir, you've said that the PM wanted to prepare a pitch, a communal pitch, and you have not succumbed to that. You are playing on a pitch of development issues. So on a lighter note, would you say that the Congress has managed to hit it out of the park? No, I don't want to use cricketing language too much, but yes, there was a pitch that which he nurtures every day. We have still got 8 days more. The campaigning ends on 30th, and today we are speaking on the 21st. 9 days more. What new things he will bring on that communal pitch, only he knows, because he is the master of diversion, master of distortion, and he is the master of defamation. He's a 3D master. So you would say you're up to his googlies? Well, he's trying to bowl googlies, he's trying to bowl bouncers, he's doing body line. But if you continue with this cricketing language, I think we have successfully navigated his googlies. We have successfully navigated his bouncers. We've bowled a few googlies and bouncers at him back, which he has tried to avoid, but he's not been able to avoid. So, but I think, more seriously, I think it's the 5 Nyayas, 25 Guarantee program. It's the campaigning Congress party leaders, Congress President, Mr. Rahul Gandhi, Priyanka ji, who's campaigned so magnificently across the country, particularly in UP as well. So I think it's the combined effort of all these people. And of course, ultimately, the people want to vote for us. This is people versus Modi.
It's not just Congress India Janbandhan versus Modi. It's the farmers versus Modi, women versus Modi, it's labor versus Modi, it's youth versus Modi, and it's the social engineering is the scheduled castes, scheduled tribes, and OBCs against Mr. Modi. So, Congress Party and Janbandhan, we are playing the political campaign, but ultimately it's the people who are rising up in revolt very quietly. This is an election in which people are rising up very quietly and sending a message to this jaded and faded Prime Minister. You are outgoing. On the 4th of June, you will be going out. So, final question. So, on 4th of June, do you see a 2004? Absolutely. This is a 2004 moment. You will see. And people keep asking me, Pradhan Mantri kaun banega? I just remind you, the results of the 2004 election came out on the 13th of May, 2004. By 17th of May, Dr. Manmohan Singh was clear, was going to be the Prime Minister of India. At this time, it may be even quicker. So, and in any case, elections in India are not a beauty contest. It's not kaun banega Pradhan Mantri, or it is kisko, kis party ko, किस जनबंधन को, जिस गठबंधन को मिलेगा जनादेश. So first, we are a party-centered democracy. We're not like the American system. It's not a beauty contest between individuals. It's a choice between parties, among parties. But you're saying that after the results, there won't be any problem in Absolutely not. Absolutely not. You will see. I'm telling you, this is a 2004 moment. Are you a buff of Bollywood films? Yeah. In 1962, probably you were not born then, but in 1962 there was I was a kid of 8 years old. I saw this film. I must have seen this film much later, but in 62 it was released. Very famous film based on the Sherlock Holmes mystery, The Hound of Baskervilles. It starred Wahida Rehman and Bishwajit, and it had haunting songs which people सदाबहार गीत जो कहते हैं ना, लोकप्रिय गीत, वो लोग आज भी याद करते हैं, आज भी गुनगुनाते हैं रेडियो में और कैसेट में. उस फिल्म का नाम था 20 साल बाद. 20 साल बाद जो 2004 में हुआ, 2024 में आप देखेंगे. थैंक यू वेरी मच सर.